there is something about Aman which, you know, makes your heart beat a little faster. I think he radiates an aura which is quite unique. And, you know, Aman, tell us what is is there something special about you? Yes sir, मैं अपनी तारीफ कितनी करूँ अच्छा नहीं लगेगा. Modesty is more important, right? So, नहीं sir, thank you for calling me here first. Modestly, tell us what is special about you. Nothing is special sir, just a common man, common boy, and God has been kind. What else? Special is क्या बताऊँ sir, अजीब शर्म आ रही है बोलते हुए, but yeah, maybe people relate to me more because you know I'm one of them, and मेरे को याद है 5 साल पहले I used to be in I used to love this show. Convergence India is a fantastic show, और मैं as a visitor आता था 5 साल पहले, और आज touchwood God has been kind कि मेरे को as a speaker आने को मिल रहा है. So I think people get a lot of inspiration and courage कि मेरे से कि शायद अमन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, right? So I think maybe it's that. So tell us, you know, you have multiple, you wear multiple hats. Boat, of course, is my favorite because it's a future global leader in an important category. Then as an investor, Shark Tank, as a inspiration to the youth, right? In the future, suppose when your children grow up, what would you like them to be? Professionals, entrepreneurs, and what would you like the youth of India to be? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब फर्स्ट इसमें पार्ट ये है कि मैं यू गाइज आर ओके विद हिंदी ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट पार्ट यही है कि सर व्हाट विल आई लाइक माई चिल्ड्रन टू बी. इट इज़ वेरी टफ about the youth of the country, sir. I'm very excited on where India is growing. I remember I was telling ma'am when I was sitting here, and I was telling her कि there was a time when India में businessmen used to be negative, right? हमें चोर बोला जाता था कि business करना है तो शायद चोरी होगा कहीं, इसीलिए पैसे बनाए हैं, you know, और हमारे को न्यूज़ भी यही आती थी, right? कि ये कैश का बिजनेस करते हैं, या ये कर रहे हैं, या ये यहाँ पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ खरीद ली है. तो बहुत डर लगता था बिज़नेस करने में, राइट? जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था तब भी डर लगता था कि यार बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं लोग. इवन माई मदर इन लॉ यूज्ड टू लुक एट इट नेगेटिवली बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम दे ऑल कम फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड. मेरी मॉम भी टीचर होती थी, तो बिज़नेस करना वॉज नॉट अ पॉजिटिव साइन. बट लुक एट इट टुडे. There I go to a lot of colleges, and I love to meet students and young entrepreneurs, and I meet them, and then they have that desire to do something of their own, right? They want to be entrepreneurs, right? They want to start up, they want to work in a startup. So I think times have changed totally from from never looking at startups to being a startup founder. And it's so nice for the country also that this change is happening, right? Even our Honorable Prime Minister Modi ji also keeps saying that startups will play a very important role in Viksit Bharat, right? 2047. And if you see, there is Startup Day being celebrated, and I wrote it on my Instagram and LinkedIn last month. There was a time when we used to celebrate Valentine's Day. We still do, but we also celebrate Startup Days now. And I don't think there is any other country which celebrates a Startup Day, but we do, right? And which gives a lot of hope that startup में काम करने में कोई problem नहीं है, right? Startups में अगर आप if you can dream big, then there is something which can happen to you, right? And people like us give like live examples that हम लोग भी काम करते थे, फिर हमने सोचा चल यार जब ये स्टार्टअप इंडिया वगैरह लॉन्च हुआ तो हमने भी सोचा कि यार चल कुछ स्टार्टअप करके देखते हैं, और देखते ही देखते we've done well. So same way I think the youth today gets a lot of inspiration from startup founders. Like हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों को ये इलॉन मस्क, जेफ बिजोस और ये मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों के नाम सुने होते थे, राइट? इनसे इंस्पायर होते थे. पर आजकल इतना अच्छा लगता है कि लोग हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर होते हैं और कहते हैं हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है. सो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट. आई थिंक इफ आई कैन आस्क अ पोल हियर, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स? Look at that, sir. Isn't it amazing? That's very interesting. Right? That's and that is what India is, sir. That is what the future of India Yeah. is.